Bismillah Rahman Rahim. I'm Sarah Khan, your instructor, Application of Statistics in Psychology for the course code 509. This is our lecture 12, which is about the introduction of T statistics. Actually, we are learning nowadays the hypothesis testing uh, to test a hypothesis about the population. We collect the data from the sample, and on the basis of the information which we have collected from the sample, we test our hypothesis which we have made about the population. There are some statistics or this, tests which we are used for testing the hypothesis. Uh, with the we have learned z-test uh, when we have some information about the population, about the mean and the standard deviation of the population. When there are many situations in which we don't have any information about the population, mean or the standard deviation. In this case, we use the test statistics, the t-test. There are many other tests, f-test and chi-square, which are used in the different situations. Here in t-test we can compare only two groups, but in the ANOVA, in which we test our hypothesis testing based on f-test, we can compare many groups. So there are different situations in which we use the different tests. Today, I will introduce the test statistics as the t-test, student t-test. Uh, T-test is used to test the hypothesis about an unknown population mean. When the value of mean or the standard deviation is totally unknown. The formula of t-test has the same structure as the z-score formula, except that the t-statistics uses the estimated standard error in the denominator. This t-test allows the researcher to use the sample data to test the hypothesis about an unknown population mean. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टी टेस्ट के बाद जब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी भी सैम्पल डेटा पर, तो एक्चुअली उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास उस पॉपुलेशन के मुतालिक जिससे वो सैम्पल ड्रॉ किया होता है या सेलेक्ट किया होता है, उस पॉपुलेशन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी ना तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में, मतलब ना तो मीन के बारे में और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बिल्कुल अननोन होती है रिसर्चर के लिए। उस सिचुएशन में रिसर्चर जो है वो टी स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल करता है। द पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ द टी टेस्ट इज दैट टी टेस्ट does not require any knowledge of the population standard deviation. Thus, a t-test can be used to test the hypothesis about completely unknown population. That is, both the mean and the standard deviation are unknown. In other words, population parameters are unknown, and only the available information about the population comes from the sample. Obviously, we use the sample information. We
the sample which we have drawn from that population of the interest. Uh, we use all the information that we have collected from the sample and test the hypothesis about the population. And the only difference that I already have described, the only difference between the T formula and the Z formula is that the Z score or the Z formula uses the actual population variance or the mean. And the T formula uses the corresponding sample variance and the sample standard deviation when the population value is not known. All that is required for a hypothesis test with the z-test is the sample and a reasonable hypothesis about the population mean. There are two general situations where this hypothesis test is used. The test statistics is used when the researcher wants to determine whether or not a treatment causes a change in the population. I mean, in this case, we must know the value of mu for the original untreated population. Because we have no knowledge about the population is completely unknown. We hypothesized some mean value about the population and test the hypothesis. A sample is obtained from the population and the treatment is administered to the sample. If the resulting sample mean is significantly different from the original population mean, then you can conclude that the treatment has the significant effect. And the second situation, occasionally a theory or the other prediction will provide a hypothesized value for an unknown population mean. If we have the prior information or some theory about the topic or the variables which we are studying, then on the basis of the theory and the other prediction, we hypothesize the value of unknown population mean. A sample is then obtained from the population and the T statistic is used to compare the actual sample mean with the hypothesized population mean. मैंने पहले भी कहा क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि हमने ओरिजिनली जो पॉपुलेशन है उसके मीन के मुताबिक हाइपोथेसिस बनाकर और उस की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है. अब जो पॉपुलेशन है वो तो कम्प्लीटली अननोन है हमारे लिए, ना हमारे पास उसका कोई मीन है और ना ही हमारे पास कोई उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो ऐसी सूरत में theory or the other predictions हमें guide करेंगी and we will hypothesize the value of an unknown population mean only in this one sample t-test. A sample then is obtained from the population and t-test is used to compare the actual mean with एक्चुअल मीन कौन सा है, एक्चुअल सैम्पल मीन, यानी वो मीन जो कि हमने सैम्पल से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं, इंफॉर्मेशन उन इंफॉर्मेशन की बेस पर जो हम सैम्पल का मीन कैलकुलेट करते हैं
और जो हमने पॉपुलेशन मीन हाइपोथेसाइज्ड किया है, इन दोनों मीन्स को हम कंपेयर करते हैं। अ सिग्निफिकेंट difference indicated that the hypothesis value for the mu should be rejected. Now we will talk about the t distribution, same as the z distribution. जिस तरह से z distribution जब हम बनाते हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द टी वैल्यूज कंप्यूटेड फॉर एवरी पॉसिबल रैंडम सैंपल for the specific sample size or the specific degree of freedom. The t distribution approximate the shape of the normal distribution. How will a t distribution approximate a normal distribution is determined by the degree of freedom. In general, the greater the sample is, the larger the degree of the freedom, and the better the t distribution approximately normal distribution. Actually, every sample from the population can be used to compute same as the z-score t statistics. If we select the possible sample of a particular size and compute the z-score for each sample, then sample mean, then the entire set of z-score will form a z-score distribution. In the same way, when we compute the t statistics for every sample, and the entire set of t values will form a t distribution. As we saw in the we learnt in the last lecture, the distribution of z-score for the sample mean tends to be a normal distribution. Specifically, if the sample size is large, or if the sample is selected from the normal population, then the distribution of sample mean is nearly perfect normal distribution. In this same situation, the t distribution approximates a normal distribution, as depicted in this figure, which shows a normal distribution and two t distribution with the degree of freedom 5 and degree of freedom 20. The distributions of t statistic for the different values of the different degree of freedom are compared to normal z score distribution. Like the normal distribution, t distribution is also bell shaped, obviously, and symmetrical, and have the mean value of 0. However, t distribution are more variable than the normal distribution, as indicated by flatter and the more spread out shape. The larger the value of the df is, the more closely the t distribution approximate नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये डॉटेड में है, परफेक्ट शेप के साथ, परफेक्ट बेल शेप के साथ। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन
डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के साथ है वो मोर फ्लैटर है, या जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी है लेकिन उसी के साथ मिलती जुलती है, बेल शेप्ड है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 के साथ है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये मोर रिजेंबल टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होता जाएगा, ज़ाहिर है कि जितना सैंपल बड़ा होगा उतना मतलब अगर हमारे पास सैंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है तो उसका मतलब है हमारे पास सैंपल जो था वो सिर्फ और सिर्फ 6 था। 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गया। और इसी तरह से इस जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, डी डिस्ट्रीब्यूशन की डीएफ की वैल्यू है 20, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास सैंपल था 21 और उसमें से हमने 1 माइनस किया तो डीएफ जो है वो 20 आ गया। तो इसी तरह से सैंपल जितना ज़्यादा बड़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ही ज़्यादा होगी और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है will be more resemble to the normal distribution. A quick glance at the figure uh, reveals that the distribution of T are bell-shaped and symmetrical and have a mean of 0. Uh, However, the T distribution has more variability than a normal Z distribution, especially when DF values are small. When the DF values are small, the T distribution tend to be flatter and more spread out, whereas the normal Z distribution has more of the central peak. ये टी स्टेटिस्टिक्स का टेबल है जहाँ से हम टेबुलेटेड वैल्यू मालूम करते हैं अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। जब हमने क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना होता है तो हम इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जी टेबल आपको जी टेस्ट का टेबल हमें आपको दिखाना था, लेकिन वो बुक में से मुझे एट दैट टाइम जो है वो नहीं मिला। तो मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे आपको दिखा भी दूँगी और किस तरह से इस टेबल से हमने टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करके कैलकुलेट करके नहीं बल्कि देख कर आइडेंटिफाई करके हमने अपने क्रिटिकल रीजन को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो जिस तरह से हम हाइपोथेसाइज भी कर लेते हैं, हम अभी इसे प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि अगर हम टू टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं और 0.05 अल्फा लेवल है तो दोनों टेल्स में हमारा क्रिटिकल रीजन पाया जाएगा। और जब दोनों टेल्स में हमारा क्रिटिकल रीजन पाया जाएगा तो हम 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। तो अब हम अगर हमारे पास हमारा जो सैम्पल साइज था वो 8 था तो डीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डीएफ 7 है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है और हमने जो अल्फा वैल्यू है वो 0.025 में हमने मालूम करना है। तो हम इधर से इस कॉलम और इधर से इस रॉ को हम देखेंगे, जहाँ दोनों ये मिलेंगी वो हमारा
जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी टी स्टेटिस्टिक्स की, और यही वैल्यू जो है वो हमें हमारा क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करने में मदद देगी। जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट की थी इसके लिए, तो हमने ये कहा था कि हमने दरअसल जो एक्सपेक्टेड मीन है या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एरर है, सॉरी, इसको हमें रूल आउट करना होता है कि कहीं जो हमारी चेंज आया हुआ होता है या जो भी हमने सैंपल सेलेक्ट किया हुआ होता है, जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो दरअसल हम ये जो एरर एक्सपेक्टेड होता है इसको हम उसमें से रूल आउट कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि इसकी कैलकुलेशन और इसकी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। Whenever a sample is obtained from the population, you expect to find some discrepancy or the error between the sample mean and the population mean. The general phenomena is known as sampling error. ये हम बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। The goal for hypothesis testing is to evaluate the significance of the observed discrepancy between a sample mean and the population mean. The hypothesis test attempts to decide between the following two alternatives. If it reasonable that the discrepancy between sample mean and the population mean is simply due to the sampling error and not the result of the treatment effect. Is the discrepancy between the mean and the mu more than would be expected by the sampling error alone? That is the sample mean significantly different from the population mean? जाहिर है कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है में दो ही हमारे पास अल्टरनेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो हम पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन जो हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन के मुताबिक उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर तो और मीन को हम कंपेयर करें इन पॉपुलेशन मीन को और जो हमारा सैंपल मीन है उसको हम कंपेयर करें, तो इस कंपैरिजन में अगर तो ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, अगर तो ये डिफरेंस हमें इस सैम्पलिंग एरर से समझने के कम है, ये डिफरेंस है, ठीक है, और हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है ये सिर्फ सैम्पलिंग एरर है, फिर तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि सैंपल में और जो हमारी पॉपुलेशन है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये डिस्क्रिपेंसी, अगर ये सैम्पलिंग एरर जो है ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है between the sample mean and the mean the population mean, ये ज़्यादा है आ गया है या ये जो वैल्यू है ये हमारे क्रिटिकल रीजन में पाई जाती है, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्चुअली इस टेबल से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आ गई है हमारी और क्रिटिकल रीजन में हमारी वैल्यू जो है वो टी स्टेटिस्टिक्स की लोकेट होती है, तो हम सिंपली ये हाइपोथेसिस ये कंक्लूड करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है ये ट्रीटमेंट की वजह से आया है। तो हमारे पास कुछ फार्मूला है इस चीज़ को कैलकुलेट करने का, इस चीज़ को हमने पहले भी सैम्पलिंग एरर को कैलकुलेट करने का हम जो है वो मेथड
सीख चुके हैं जब हमने जी टेस्ट की कैलकुलेशन की थी, लेकिन यहाँ जी जो टेस्ट था उसमें जब हमने कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो था वो नहीं था, लेकिन यहाँ की टेस्ट में हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है। तो जाहिर है कि हमने जो भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उसमें से पहले हमें उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मालूम करेंगे, और जब हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो आ जाएगा तब हम उससे एस्टिमेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर को। तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला तकरीबन वही है जो कि जी स्कोर में था जब हमने इसको जी टेस्ट की कैलकुलेशन सीखी। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस यूज़ होता था और यहाँ पर हमारे पास सैंपल वेरिएंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना है। तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो है टी स्टैटिस्टिक्स का भी एक फार्मूला है जो कि अभी हम यूज़ भी करेंगे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखेंगे विद वन सैंपल। एक सैंपल हमारे पास होगा और उस सैंपल के ज़रिए हम वन सैंपल टी टेस्टिंग सीखेंगे कि हम टी टेस्ट जो है वो वन सैंपल से कैसे हाइपोथेसिस हम हमारे पास टेस्ट सैंपल एक होगा और हम टी स्टैटिस्टिक्स लगाकर पॉपुलेशन के मुतालिक जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसे टेस्ट करना सीखेंगे आज। तो टी का फार्मूला टी जो है वो फॉर्म अ रेशो, द टॉप ऑफ द रेशो कंटेन्स ऑब्टेन डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, यानी यहाँ हम जो हमारा सैंपल मीन है उसमें से हम जो हमारा पॉपुलेशन हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन है उसे हम माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस ले लेंगे और फिर उसे डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड से, यानी ये जो हमारे पास डिफरेंस आया है इस डिफरेंस में से वो डिफरेंस जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं वो रूल आउट कर देंगे। इस डिवीजन के बाद जब हमारे पास जो भी वैल्यू आती है मीन की, अगर तो वो हमारी क्रिटिकल रीजन में लाई करती है यानी आती है तो हम कहेंगे जी हमारा एच नॉट यानी जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है वो रिजेक्टेड है और जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और अगर हम कोई ट्रीटमेंट हमने अपने सैंपल को दिया था तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो जो treatment has an effect. Obviously, the large value of t indicates that the obtained difference between the data and the hypothesis is greater than would be expected if the treatment has no effect. The value of degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम उनको मैंने पहले भी बताया, हम n -1 से ऑब्टेन करते हैं, इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ वेल द टी स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट a z score. Also the value of df will determine how well the distribution of t approximate a normal distribution. The large value of df, the t distribution will be nearly normal, but with the small values of df, the t distribution will be flatter and more spread out than the normal distribution. To evaluate the t statistics from the hypothesis test, we must select an alpha level
find the value of DF or the P statistics and consult to the T distribution table, जैसा कि मैंने पहले बताया इस टेबल में. Okay? तो in the case we have demonstrated that the obtained difference between the data and the hypothesis is significantly large, and the difference that would be expected if there was no treatment effect. And then we conclude that the treatment has an effect. Now the actually हमने अभी तक जितनी चीज़ें वन सैम्पल टी टेस्ट में इस्तेमाल होनी थी, जिस तरह से भी हमने टी टेस्ट जब हमने सीखना था इसको, टेस्ट स्टेटस को, जो भी चीज़ किस तरह से हमने टेबल में से वैल्यू देखनी है, किस तरह से हमने DF कैलकुलेट करना है, किस तरह से हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, क्या फार्मूला होगा कि हमने टी स्टेटिस्टिक्स हमने कैलकुलेट करना है, और किस तरह से हमें अल्फ़ा वैल्यू के ज़रिए टेबल में से हमने टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है टू आइडेंटिफाई आवर क्रिटिकल रीजन. ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं. तो इसी तरह से इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसी तरह से 4 जो हम स्टेप्स सीखे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, उन्हीं 4 स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो टी टेस्ट इसमें देखेंगे. सबसे पहले हम स्टेट करेंगे अपना हाइपोथेसिस, यानी दोनों हाइपोथेसिस, null hypothesis and the alternative hypothesis. और इसी तरह से हम अपनी वैल्यू ऑफ अल्फा सेलेक्ट करेंगे ताकि हम अपना क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है जी. और फिर हम तीसरे स्टेप में कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टी टेस्ट, और इसके लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम पहले से कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे कि मीन हमें चाहिए होगा हमारा सैम्पल का, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगी, हमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेटर चाहिए होगा, तब हम टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जब हमारे पास टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में पाई जाती है, यानी एक्सेप्ट रिजेक्शन रीजन में पाई जाती है, या जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में पाया जाता है. तो उसकी बेस पर हम अपना जो है वो डिसीजन करेंगे कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है. ऑब्वियसली इसका हम इफेक्ट साइज भी कैलकुलेट करेंगे. इफेक्ट साइज पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो हमें सिग्निफिकेंस बताता है, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट, और ये डायरेक्टली जो है वो हमारे सैम्पल साइज के साथ अगर सैम्पल ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है वो भी सिग्निफिकेंट आ जाएगा. इसीलिए रिकमेंडेड है कि हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ इफेक्ट साइज को भी रिपोर्ट करें, because the significance of treatment effect is determined partially by the size of the effect and partially by the size of the sample. You cannot assume that the significant effect is also has a large effect. Therefore, it is recommended that the measure of effect size be computed along with the hypothesis. और इसको हम कोहेरेंसी को इस तरह से टी टेस्ट के लिए हम कोहेरेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. और इसी तरह से हम इफेक्ट साइज जो है वो आर स्क्वायर वैल्यू से भी मालूम कर सकते हैं.
जी, ये एक research study है. In the study, infants from 1 to 6 days old were shown two photographs of women faces. The babies were positioned in front of a screen on which the photographs were presented. The pair of faces remained on the screen until the baby accumulated a total of 20 seconds of looking at one or the other. The number of the seconds looking at the attractive face was recorded for each infant. Suppose that the study used a sample of n is equal to 9 infants, and data produced an average of I mean sample mean is 13 seconds for the attractive phase with the standard deviation 3. ये एक रिसर्च सिचुएशन है हमारे पास, और इसमें n जो है वो 9 है और सैम्पल मीन जो है वो 13 है और सैम्पल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है. तो हम सारी स्टेप्स में जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो करेंगे. सबसे पहले हमने हमारा जो है वो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला जो स्टेप है क्या करना है, हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेट करना है. तो इस यहाँ पर null hypothesis mu is equal to 10 seconds which is hypothesized, and the null hypothesis state that the infant has no preference for either phase. The non-directional alternative hypothesis is mu is not equal to 10. We will these are the two hypotheses, null hypothesis and the alternative hypothesis. Now we will select our alpha value. The selected alpha value is 0.05 for the two tail test. दोनों tails में हमारा critical reading जाएगा. Obviously, the test statistics is the t-test, and because the population variance is unknown, therefore the value of degrees of freedom must be determined before the critical region can be located. Obviously, critical region को locate करने के लिए हमें DF की जरूरत पड़ेगी. तो DF डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करना है हमें, उसी तरह से n-1 करके. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 8 है. अब 8 हमारा जो टेस्ट है वो टू टेल्ड है. टू टेल टेस्ट एट 0.05 level of significance and with 8 degree of freedom. The critical region consists of t values greater than plus 2.306 and less than 2.306. ये हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की. अब हमारे पास n जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास 8 है, और हमने टू टेल टेस्ट है और अल्फा लेवल 0.05 है, और इधर टू टेल है तो एक टेल में 0.025 और दूसरी टेल में भी 0.025 होगा. तो हम इसे 0.025 के कॉलम में ही देखेंगे. हमारा 8 है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इधर से हमें 0.025 के कॉलम में देखना है. तो यह है 2.306. तो ये भी ये देखिए कि 2.306 ग्रेटर देन, यानी हमारी जो लेफ्ट टेल होगी, फिगर ही आपको दिखाते हैं. ये हमने अपने DF की मदद से और अल्फा वैल्यू की मदद से हमने अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किया है.
ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, इधर से ये और इधर से ये, ठीक है जी। और ये हमारा एक्सेप्ट, ये रिजेक्शन रीजन है फॉर नल हाइपोथेसिस। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इस रीजन में या इस रीजन में आएगी तो हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, और अगर इधर आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर देंगे। सो हमें डिसीजन लेने के लिए कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी स्टेटिस है वो इस रिजेक्शन रीजन में आती है, एक्सेप्टेंस रीजन में आती है, तो हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला आपको मैंने पहले भी सिखा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमें डिवाइड करना है n का अंडर रूट लेकर उससे। तो स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर होगा? हमारी जो सिचुएशन दी थी उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी थी 3। तो यहाँ हम s की जगह जो है वो 3 पुट करेंगे, और n हमारे पास कितना है 9 का जब हम अंडर रूट लिया तो ये 3 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है जी। यानी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट करके आया है, जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर आवर सैंपल इज 1। फाइनली इस स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो हम अपने टी स्टेटिस के फार्मूले में पुट करेंगे। टी का फार्मूला जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया, ऑब्टेन डिफरेंस को हमने स्टैंडर्ड एरर से यानी जो ऑब्टेन डिफरेंस आया है उसमें से रूल आउट करना है हमें स्टैंडर्ड एरर को। तो सबसे पहले हम डिफरेंस मालूम करेंगे, मीन को में से मीन निकालेंगे और उसे स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करेंगे। हमारा जो मीन हमारी जो सिचुएशन दी हुई है उसके अंदर मीन भी लिखा हुआ है। मीन जो है वो 13 है, ठीक है, और जो हमने हाइपोथेसाइज्ड मीन किया है वो 10 है। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे 13 माइनस 10 और डिवाइड इसे करेंगे स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 3 है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये 3 कहाँ लोकेट करता है। ये ज़ाहिर है रिजेक्शन रीजन में पाया जाता है, ठीक है जी। तो इसी की बेस पर हम अपना डिसीजन लिखेंगे कि हमारी जो द ऑब्टेन टी स्टेटिस्टिक्स 3 फॉल्स इनटू द क्रिटिकल रीजन on the right hand side of the T distribution. Okay. जी, next, after making the significant after finding the after rejecting the null hypothesis, we conclude that the difference between sample mean and the hypothesized population mean is significant. Now we will calculate the effect size. पहले भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस फाइंड कर लेना काफ़ी नहीं है, हमें इफेक्ट साइज भी साथ में रिपोर्ट करना होता है। तो इफेक्ट साइज कोहेंस डी से हम मालूम करते हैं, और कोहेंस डी में हमने मीन डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो मीन डिफरेंस हमारा 13 में से 10 माइनस किया था 3 आया था, और जो हमने गिवन स्टैंडर्ड एरर से नहीं करना, हमें इसे स्टैंडर्ड डेविएशन से करना है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी जो हमें जो
गिवन थी और वो 3 थी और 3 को हमने इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब कौन सी ने इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, तो उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो अगर 0.2 या 0.2 से कम हो तो ये स्मॉल अफेक्ट है, अगर कहीं डी बिटवीन 0.2 एंड 0.8 हो तो ये मीडियम है, और अगर ग्रेटर देन 0.8 हो तो ये लार्ज अफेक्ट है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये 1 आया है तो ये लार्ज अफेक्ट है। The second method for finding the effect size, we calculate the value of r square. The formula to calculate the value of r square is t square divided by t square plus df. तो t square की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और 3 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, और इसी तरह से टी स्क्वायर का फिर हमने टी का फिर हमने स्क्वायर लिया और उसमें प्लस डी एफ किया, तो 9 प्लस 8 आ गया, तो 9 डिवाइड बाई 17 हो गया। तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है तो ये 0.53 आई है। तो आर स्क्वायर वैल्यू की इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है कि अगर वैल्यू 0.25 से ज़्यादा होगी तो लार्ज अफेक्ट होगा, यानी जो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 53% आ जाता है, यानी 53% जो है वो हमारे ट्रीटमेंट अफेक्ट किया है। यानी जो आईवी में डीवी जो आईवी ने डीवी में चेंज लेता है वो 53% है। ये एक एक्टिविटी मैंने दी हुई है, ये कुछ स्कोर्स हैं, इससे आपने मीन भी मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम। अभी जो हमने एग्जाम्पल की है इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी, लेकिन इस डेटा से जब आपने कैलकुलेशन करनी है, आप उस टेस्टिंग करनी है, तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप null hypothesis एक टेस्ट करेंगे about the population. These are the references. Okay. Today we have learned how to calculate the T statistics. We used T one sample T test for testing the hypothesis about the population mean. So all the formulas, all the steps are followed according to the process of hypothesis testing. मुझे उम्मीद है कि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई आपको कोई क्वेश्चंस हुए, कोई डेफिनेटली होंगे, वो हम फिर क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब लेक्चर में। अपने इन बुक्स को ज़रूर देखना है, ये ऑनलाइन भी मौजूद हैं, और इसमें से 2 ये हॉवर्ड और ग्रेविटा की जो है वो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है, आप सॉफ्ट कॉपी भी कंसल्ट कर सकते हैं।